Good morning from Dubai, ladies and gentlemen. This is Adnan Suhail, and welcome in today's this webinar. I will be joined by Uroos Khan from Australia and Dr. Muhammad Amjad from Pakistan in today's this session. Session that is no doubt it's very much important, and I must first of all thank you everyone who expressed their interest and they have joined us in today's this session. Our topic of today is managing stress in difficult times. Let me give you a quick introduction of both of my guests. If we go and so with me is Uroos Khan. She's TV presenter on emotional health. She's joining us from Australia. She's a well-being practitioner, TV host, certified in women empowerment, emotional intelligence, and mindfulness. These are her key expertise. And we would love to listen from Uroos Khan that how mindfulness, emotional intelligence, well-being practices, these can help someone to reduce stress or handle stress when it is a difficult time. Along with Uroos, we are being joined by Dr. Muhammad Amjad Chaudhary. He's a psychiatrist and CEO of Umeed Clinic, Lahore, Pakistan. He's an international fellow of APA USA, International Associate of Royal College of Psychiatrist, UK. He's a global trainer, and he's head of the teaching department at PIL, which is Pakistan Institute of Living and Learning, which is based in Lahore. My name is Muhammad Adnan Suhail. I'm by profession a learning and career advisor. My job is to meet with people and organization and develop. With over the last 12 years based here in Dubai, I'm helping individuals, organizations to develop their people by training and development, their business and business processes. So we are very much excited to have you all in our today's this session. Welcome, Uroos Raza. Thank you so much, Adnan, for that introduction. Really appreciate it. Welcome, Dr. Muhammad Amjad, also in today's show. Thank you very much, Adnan, for giving me the nice introduction. It's been a pleasure to you be both are most welcome, and it's my pleasure to host you. And I, on the behalf of all of our audience and myself, we appreciate your time and thank you for coming online and getting ready to tell people that how to manage stress. Stress is often, I personally believe that it is viewed as a purely negative term. It's seen as a response that should simply be minimized or pushed aside. However, I'm sure that there is possibilities to use stress for a positive change. It's not always bad. It's the matter that how we are going to use stress. So in today's this show, we will discuss what stress is exactly, how you can identify when you are stressed, what could be the triggers which are putting you in stress, and how to train yourself to use your stress in more effective ways. In your personal life as well as in the organizations, what managers can do to reduce their employees' stress level when the organization is going through difficult times. Warm welcome once again, Dr. Amjad, Uroos Khan. Thank you for your time, and we are looking forward to hear from you about the topic. Over to you, Uroos. First of all, please tell us first about this journey, how you started to help out people, what made you do this. Thank you again, Adnan. The reason why I started talking about self-awareness and self-care is purely because I lacked it myself. And I know what it's like to not do it and not have that. And once I learned through lots of studying and self-analysis, meditation, whatever you want to call it, I decided I want to talk about this to everyone. Everyone should know who they are and what their emotions are and how they can manage them in a better way to live a happy life. That's amazing.
we are very much glad to have you with us, and I'm sure that the angle of managing stress and dealing with stress, which you are going to discuss with us, is going to be amazing, which everyone can do while sitting at home and with just some basic practices. But in the same time, I would like to listen from Dr. Muhammad Amjad Chaudhary. Doctor, please tell us about yourself a little bit. I know that you are having quite a vast experience and huge profile. Probably I just told a few of the things. So tell us about yourself. डॉक्टर मोहम्मद अमजद चौधरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? I'm unable to listen properly to you. All right, so we would love to listen from you about your journey and how you decided to become a psychiatrist. What type of situations do you face nowadays, people, and especially in COVID-19 situation, stress everywhere. Like how do you find like the people are coping up with this? I think so. There is maybe some technical issues. So let's go to Uroos and ask the same question. How do you find the situation nowadays, starting from Middle East to Europe, from Australia, America, situation which is everywhere, that's the COVID-19 pandemic. Somewhere the cases are more, somewhere are less, and people are losing jobs, people are suffering from health issues. And at the same time, this is piling up the level of stress in people. So tell that, what kind of people do you see around you and how they are themselves trying to manage their stress level? Adnan, to begin with, to be able to understand that you're stressed or anxiety or tired or whatever that is that you are, the important thing is to know what it is that you are really feeling. That's the first thing to begin with. And anything, any feeling or any emotions or anything other than your feeling of joy and gratitude is something that is a disbalance within your body. We are energies, and anytime there's a disbalance in energy within our body, that's when we experience emotions like stress, emotions like fear, emotions like disbelief or hopeless. All these emotions come when you have this balance of energy in your body. And that's what I recommend everyone, whoever I come across and talk about, is to, yes, take some time out for yourself and spend some time in nature. So how can we differentiate? Because there are a lot of terminologies which are used: stress, anxiety, burnout, mental health. So can you please tell that how we can differentiate that what is stress and how it becomes anxiety, or when is the time when we can call it a burnout or a mental health issue? So, Adnan, as I said, any of these emotions that you mentioned are basically a disbalance of energy in your body. Anytime your energy is flowing through your body, consider it like filling a glass of water, right? When a glass of water is full, what happens? The water spills out. So the body is the same. Your body is made up of energy, and whenever there is disbalance of energy in your body, you experience different things. You probably will start something with being stressed with each and everything that's around you, leading you to anxiety, leading you to burnout. Yes, we are very, what do you want to say? We like to give names to different emotions or different things that are going on, but basically there are two kind of emotions: emotions that make us feel good, emotions that don't make us feel good. And anything that is not making you feel good is a disbalance of energy that you need to get back in balance by meditation or spending time in the nature, spending time with pets, or even with kids. Kids are pure positive energy, and that's what you need to do. Spend time with them and you will be back to your happy self again. Gratitude is another thing that you can do to bring yourself back into that positive energy. I think so. Dr. Amjad joined us. Dr. Amjad, can you hear us now? Dr. Amjad, can you hear us now?
as Rosa rightly said, that stress is really there's a disbalance in energy. But if you look at the definition by the UKHSC define the stress is a process that arises when the demands of our types and the combination exceeds our personal capacity to cope. When there is a demands of work has been increased and our capacity to cope, that work is beyond our limit, then the problem that arises, that is called stress, and then we are unable to do so. And if we keep on increasing our energy, if we keep on working on our physical, psychological and emotional self, then we are able to handle it. And if we keep on increasing our stretchness, our elasticity and our neuroplasticity of the brain, we are able to perform more and more and leave to the upper, as this you will see in the word, people with the in the 70s, in the 80s, they are able to work in the later part of the life just because they have maintained and they have developed the ability of resilience. That's a very important ability a person can have. More we have a resilience, more we are able to deal with the stress. So stress is not a positive term. It's really a term that tells us that there's something wrong with us, that we have to take care of that. Thank you. Beautiful. I think so. This is, I came across such a beautiful definition which you told, that this is the difference between your demand and capacity. So either you have to lower down your demand or you have to increase your capacity in order to minimize the level of stress. So Dr. Amjad, here, tell us one thing more, that are there any particular situations when people start to feel more stress, or any circumstances, like as we are seeing nowadays, COVID-19, or this is something which stay with us always and anytime we can start to feel stress? The reasons, please. Possibly there is a delay in sound. Right. Uroos, can you please tell us that what could be the possible reason someone face stress in their life? Are these particularly some circumstances, or this is something which we face day to day? Adnan, stress is definitely something we face day to day. Is the difference only is we chose to ignore it because we are always surrounded by people. We have such a busy, I myself used to have such a busy schedule doing different things on the weekends and after work. We're just too busy to analyze it. And what COVID has shown us is exactly that, because at least in Melbourne, it's still something, things are still in lockdown. We're not able to see our friends or families, go out for dinners or parties, or do anything really. We're just like at home and nothing else we can do other than analyze the fact that my life is so stressed. Yeah, very well. I can totally understand, because in a lot of the part of the world, I was reading that once again they are going to put cities or some part of the cities on lockdown as the number of cases are surging again. Yeah. Yes, that's something which we cannot control. Now, this is bringing me to my another question, that controllable and uncontrollable. I've seen that a lot of people, they become panic and they feel stress on some situation which are uncontrollable. Like this is the COVID-19. This is not in our hand how to control it. So how do you see that the level of stress for the controllable and uncontrollable situation? Should we really become keen, think about all the situation and all the happenings around us in our life, or we should focus more which are controllable things to make them better, and then we can release or reduce the level of stress? Look, if you ask me, Adnan, there is nothing that you should try to control. That is the biggest stress that people face in their life, is that they try to control each and everything. They try to reach and whereas they should always
they should be. Thing I've learned through my journey of self-awareness is that if you can control your emotions, not even control, probably control is the wrong word, but if you can manage your emotions better and your emotions become your reality, you know how they say thoughts become reality, anything that you can think can become real. Emotions are the same. If you look after yourself better, then everything else becomes secondary from that. And personally, I have seen people, the more people are trying to control both their outside situation, their work situation, and now this COVID situation, which you really can't control. Now that's why they're experiencing more stress or more challenges to what is it that they can do? Nothing. In reality, we cannot do anything about anyone or anything, really. The only person or the only thing that you have in your hand is yourself. So you can choose to get up in the morning and pay gratitude, or you can say, oh my God, just another day, right? That's your choice. That's something that you can control, right? You can't control COVID. I mean, for God's sake, even the bigger countries, even in Australia, they're still not able to control COVID. True, I totally agree with you. Now, tell me that I have seen that this is a kind of a stigma that people do not want to talk about stress. People do not want to talk about mental health because people feel that if at workplace or in family, they will talk, people will start to see them as a negative or as a patient of some disease, which is like people may call them a mental patient or something. Even at workplace, people do not open up and talk about their stress or mental health issues because they are afraid they will lose the job. Do you also see the same stigma where you are living or around you, or maybe people with you are interacting online or offline, and how we can come out from this? So, Adnan, I'll start with where I am because that's what I know the closest. So, in Melbourne, where I work and where with the people I interact with, very little people, but whatever people that I interact with, mental health is an important issue in Australia, especially in the current circumstances. There are lots of non-profit organizations that are working at the moment to look after the mental health of the communities, and there are online chat groups and whatever sessions which the local councils are organizing so that they can get in touch with people. And when it comes to work, it's exactly the same, that the organizations, they are looking after their people, not just physically, but also emotionally. Coming to the stigma, yes, where I come from, where you come from, सब पाकिस्तान से हैं यहाँ पे. Yes, mental health is a stigma. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आपको cold होता है, do you hide your cold? नहीं नहीं मेरी नाक बह रही है, I just want to hide my cold away. You can't, you don't, you're unwell, you're sick, you just need to get like cold although it's such a normal thing, right? Agar mujhe anxiety hai, it is such a big deal about it. I personally don't understand why it is considered such a stigma, whereas as I said, physically agar hum bimar hote hain to everybody goes like, oh aram karo, ye nahi karo, wo nahi karo, kaam na karo, job na karo, and then if I have mental health issues, all of a sudden I'm termed as ke yaar ye to pagal hai. I'm like, I don't know where that comes from. Let's ask Dr. Amjad. I think so now he's connected with us, and I hope he can hear us also. So, Dr. Amjad, can you please tell us about this stigma which we are talking here related to mental health and stress? Why people think that this person is a mental patient, and due to that reason, at workplace or in personal life, people even do not speak up. They do not talk or share that they are suffering from some mental issues or some stress level. So, what is your take on it? This is a very important issue that you are going to raise is stigma. This is the international word. Stigma is present everywhere in the world. I was once sitting with a very renowned psychiatrist, Dr. Norman Sartorius. He's a very renowned psychiatrist, USA. He belonged to Switzerland, and he told that the biggest problem in the treatment of the psychiatric illnesses is the stigma, not in our third world, even in the first world in the advanced countries as well, because this is the part of evolution. You'll see once there was a stigma against the TB as well. People who have the tuberculosis, people who have diabetes, they have also have the stigma and discrimination. They don't
tell other people that we have a TB or we have a diabetes. But gradually, as the awareness goes up, people going to get understand that we have a problem, and they come out, and that this physical illness has been proved to be an illness. Same is the case with the as the evolution, as the time goes on. Stigma with the mental disorders, he also gradually getting perished day by day. People in the advanced country, they came to know that this is the real problem, and this is not a thing to be hide, because if you have a problem, you just go and get help. And getting help is a sign of bravery, is not a sign of weakness. So more and more education, that makes the difference. More and more people get equipped, more and more people get know about things. They are getting coming out of the stigma. But still stigma is lurking in that. Another big reason in that is in the mental ailment, there is a paucity of test lab investigation. In other physical diseases, there are a bunch of investigation, like in the heart disease, diabetes, and other illnesses. But in the mental disorders, mental illness, there is very less investigations lab from which you can diagnose that this is your problem, this is your problem. We are just in the air. We're talking about in the air, and we don't have any proof that you have anxiety, you have schizophrenia, you have depression. We are just counting on the symptom. So this is another big reason of this problem. So as we are getting with the labs, and we are getting coming out of this stigma. So this is my perceptions there. Right. And can you also please tell us, Dr. Amjad, that what are the signs, or what is the stage when someone should go to a psychiatrist or to a doctor and or a psychologist and talk about this thing? Because a lot of time that we as Uroos before said, that day to day we face this situation, and sometimes people think that, okay, this is something normal, that I'm a little bit depressed, or I'm feeling stressed, or I'm not feeling well. So I'm sure that because this is even associated with your emotions, and in the same time it's the mental condition, and people sometimes just mix up these both things, that I'm not feeling well, maybe I'm emotionally hurt. So what are the signs, or what is the stage when someone should say that I have to go, I have to speak up, and I have to consult with a psychiatrist or a doctor? That's a great question. For example, in the depressive disorder, there are 2 weeks period. If we have a problem in the family, somebody's died, or we have some loss, or we have some breakup, or whatever it is, we become sad. We are unable to take food. We just got in the secluded into a room. We are not mixing up with people, and this takes 2 weeks. Normally, it takes 2 weeks to getting back to normal. This is called resilience. Resilience is ability to bounce back to normal. People take 2 weeks getting back to normal. If even after 2 weeks you have having the less energy, you are low mood, you're weeping, you're crying, you are getting fatigue even after taking food, then you have to get help. Number one, this is with the depression. And with other cases, if we have a problem with our spouse, or problem with our family, problem with in the school, or wherever it is, where we are unable to cope, in spite of getting help from the parents, from friends, from other area, then we have to go to the professional. If we do our level best, like in the flu, common cold, what happen, we हम घरों में क्या करते हैं, ये जो शांता पी लें, ये इसकी गोली एंटी एलर्जिक ले लें, ये ले लें, वो जब वो नहीं ठीक होता, या बुखार होता है पैराडॉल ले लें, जब वो नहीं ठीक होता, फिर हम कहते हैं आप डॉक्टर के पास ले दें. सो जब हमारी पर्सनल कैपेसिटी, हमारी फैमिली कैपेसिटी, या हमारी फ्रेंड की कैपेसिटी उसमें खत्म हो जाए, या उसमें एग्जॉस्ट हो जाए, देन वी हैव टू गेट हेल्प. वी डोंट टेक मच टाइम टू वेट एंड सफर मोर. This is a simple way to how to get help, when to get help. Great. Uroos, आप बताइए कि before even reaching to the doctor, let's talk about those precautions or some day-to-day practices, what a person can do to avoid the stress. Like, I know that which is your specialty, जैसे कि mindfulness है, जैसे कि yoga है, जैसे कि कुछ और चीजें. So talk about this thing that जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि we talk about the remedies, we try to do something at home.
And I'm sure that all these remedies might be having some background. और जिस तरह से mindfulness की हम बात करते हैं या अपने आप की थोड़ा योगा की या एक्सरसाइज की बात करते हैं, I'm pretty much sure that इसके behind there is a science कि ये कैसे चीजें काम करती हैं to help someone to cope up with stress. तो थोड़ा इस बारे में आप बताइए, what exactly is mindfulness? And before reaching to a professional doctor, psychiatrist, psychologist, how people can do something at home to manage their stress level. Adnan, to begin with, I want 100% agree with what Dr. Muhammad said here, that anytime that you feel that you're not able to enjoy the things that you used to enjoy, I mean, kabhi kabhar aisa hota hai ki you don't even have to go through grief, yeah, go break up. Sometimes it's just normal, like you just can't enjoy the things that you used to enjoy, and if it goes on for more than 2 weeks, then you should definitely go and get an external help to find out, because sometimes talk therapy is great too. You just talk to someone and you figure out what is going on. Now, coming back to ye jo baat aap keh rahe hain na, Adnan, with mindfulness and with meditation, yeah, exercise, yeah, all of these things. So there are a couple of practices which I do on a regular basis, which I would highly recommend to your audience as well. And first one is so simple. It is as simple as practicing gratitude. मैं रोज कोशिश करती हूँ, 99% of the time I get up in the morning, I write 10 things that I'm grateful for and why. उससे क्या होता है? There are two things that come out of it. One, immediately I am put in a positive mood. And secondly, when you are grateful and whatever it is that you are grateful for, everything and anything and everything multiplies. And that's the law of attraction. So everything and anything multiplies and you get more of that and everything that you desire in your life. Try that for 10 days. मैं लिख के guarantee देने के लिए तैयार हूँ. Your life changes immensely. The other thing is mindfulness. Mindfulness, what is mindfulness really? Mindfulness is being in the present moment. अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, I should not have something, oh, कल क्या हुआ था, वो अच्छा नहीं हुआ था, मुझे बड़ा दुख हो रहा है उससे. And also not thinking, oh, कल Sunday है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. So mindfulness is being here now with you, Dr. Muhammad and Adnan, talking to you and enjoying this amazing conversation that we are having. Past में आपको जाके change नहीं कर सकते. There is no point thinking about the past, okay? और रही बात future की, जिससे लोग सोच के stress लेते हैं, you know what makes future? What you're doing right now. What you're doing right now is going to make the future. So if you're stressing, worrying now, guess what you're going to get in the future? Or stress. Stress. So Yeah. that's what mindfulness really is. Or I'm sure you must have heard saying, it's called present because it is a present. It is a gift. So live in the moment. I mean, अगर आप एक सेकंड के लिए अभी सोचें, right here, right now, right in this very second, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे पास पानी पीने के लिए, I have food on the table, I've got a roof on my head, I've got a great internet connection talking to you on a video, which is like आप इतने दूर हैं, 7 hours away from me. That's it. Isn't this enough to enjoy and be grateful for? See how that puts you immensely into positive energy? Very nice. Very well said. Dr. Amjad, आप हमें अब बताइए थोड़ा सा. First, if you want to add something, what Uroos was saying, and my question was about mindfulness and some home-based practices, how someone can get benefit from that. और उसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि जब stress होती है, तो how people usually try to deal with this and what mistakes they do. और जो नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, थोड़ा इस बारे में आप हमें बताइए. बड़ी जबरदस्त अभी उसने बात की है रुस्ता ने कि माइंडफुलनेस इस वक्त दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रही है कि लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रॉब्लम ये है कि या हम पास्ट में जी रहे होते हैं या हम फ्यूचर में जी रहे होते हैं. वी आर नॉट लिविंग इन द नाउ. जैसे इकबाल ने भी कहा था, फ़कत इमरोज़ है तेरा ज़माना. और अल्लाह ताला भी हमें आज के बारे में पूछता है, आज की नमाज, आज के फिल्म के बारे में पूछ रहा है, हमारे गुजरे हुए कल या आने वाले के बारे में पूछता है. तो माइंडफुलनेस इज वेरी मच प्रेवलेंट नाउअडेज और वो बेशुमार प्रोफेशनल जो है इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं, इस थेरेपी को माइंडफुलनेस के ऊपर आए और अपने फीलिंग के साथ इन टच रहें. हाउ यू फीलिंग राइट नाउ.
डॉक्टर साहब, वी लॉस्ट योर वॉइस, आपका माइक जो है वो म्यूट हो गया है। जी यस डॉक्टर साहब। हाँ हाँ जी, अगर हमें भूख लगी है तो हमें देखना है कि भूख लगी है तो व्हाट टू डू, सिंपली खाना खाना। अगर हमें प्यास लगी है तो मैंने पानी पीना। गुस्सा चढ़ा हुआ तो मैंने डीप ब्रीदिंग करनी है। सिंपल वेज जो है, खड़ा हूँ तो बैठ जाऊँ, बैठा हूँ तो लेट जाऊँ, या अपने आप को गोइंग टू द बैल्कनी साइड पे हो जाए, वो जगह छोड़ दे जहाँ पे आप एंगर का इशू हो रहा है। अगर आपको थकावट हुई है तो कहते कोल्ड शावर लेने, सर्दी है तो हॉट शावर लेने, अपने आप को रिलैक्स कर। दीज आर द सिंपल थिंग जो माइंडफुलनेस में हमें हेल्प कर सकती हैं। और अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि स्ट्रेस के अंदर, अगर हमें वर्क में स्ट्रेस हो रहा है और हम कोप नहीं कर पा रहे, तो हम काम को करते जा रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि हमसे ब्लंडर्स हो रहे हैं, गलतियां हो रही होती हैं, और वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये कुछ घर में भी यही कुछ होता है। अगर स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो बजाय स्ट्रेस में सबसे बड़ी चीज जो है, यू हैव टू, हार्ट का फार्मूला है HALT, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। आप अपने आप को रोकें और जस्ट थिंक ओवर इट, कि अपने आप को रोक के फिर देखें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, टाइम करें, और अपने आप को रिजुविनेट करें, अपनी एनर्जी को वापस लेके आए, एंड गोइंग बैक टू द वर्क। दिस इज द इजी वे। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, या जो लोग रेगुलर बेसिस पे वॉक करते हैं, और मिसाल के तौर पर जो आइडियल तरीका वॉक का, जो माहिरीन कहते हैं, हमें 150 मिनट्स वीक चाहिए, 150 मिनट एक हफ्ते में चाहिए, 30 मिनट्स ए डे फॉर 5 डेज, 40 मिनट्स अ डे फॉर 4 डेज, 50 मिनट्स अ डे फॉर 3 डेज। कि हमारे ब्रेन का वो एरिया जिसकी वजह से हम ह्यूमेन हैं, यानी कि हमारी याददाश्त, हिप्पोकैम्पस, हमारे ब्रेन का वो एरिया जिसको परफ्यूज करने के लिए हमें 150 मिनट्स अ डे वीक चाहिए। अगर हम इतनी वॉक रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन का वो हिस्सा बेहतरीन वर्क करेगा, परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम मेंटली स्ट्रेस को डील करें और अपने आप को मेंटली इतने ज़बरदस्त हेल्दी रखें कि हम बर्नआउट से बच सकें और स्ट्रेस से बच सकें, तो फिर 45 मिनट्स डे वॉक करने की ज़रूरत है फॉर मिनिमम 5 डेज। ये वो टाइम है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिसे एंडोर्फिन और एनकैफ्लिन्स कहते हैं। ये वो केमिकल्स हैं जो हमें हर किस्म के स्ट्रेस और हर किस्म के पेन से हमें डील करने में हेल्प करते हैं। और ये केमिकल हेरोइन या मॉर्फिन, जो मोस्ट केमिकल, तो वॉक इतनी जबरदस्त चीज है। अगर हम इसके ऊपर बस सिंपली वॉक, इतना आला काम है कि इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, कोई फीस नहीं लगती, कोई कुछ नहीं लगता, इट्स ए फ्री अवेलेबल थिंग। तो अगर हम सिर्फ ये करना शुरू कर दें, हमने अपने स्ट्रेस को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जबरदस्त। उरूस, मुझे जो आपसे पूछना है, अगला एक क्वेश्चन है, शायद मुझसे कभी भी पहले भी किसी ने पूछा था, एंड दैट्स अबाउट हैंडलिंग आवर इनर क्रिटिक। अब हमारे अंदर हर एक इनर क्रिटिक होता है जो हमें ना तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होने देता है, ना ही हमारे अंदर वो स्ट्रेस फ्री हमें होने देता है। कॉन्टिन्यूसली वट एवर वी आर डूइंग, वी डोंट थिंक दैट व्हाट वी आर डूइंग दैट्स गुड, people will appreciate, people will respect, I'm happy, I'm satisfied. We keep on thinking about the things which are not अराउंड अस। कल क्या हुआ, जैसे आपने पहले भी कहा, हाउ टू हैंडल दिस इनर क्रिटिक। क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज है, इसके लिए कुछ ऐसा मेथड है? Adnan, that's a great question. Inner critic सबका होता है, and all I want to say is उस inner critic को कहें, be kind to yourself. Inner critic बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। Inner critic आपका अच्छा भी हो सकता है। Everyone has an inner being. आप उसे inner being कहें या soul कहें या critic कहें, लेकिन हाँ, making sure either are you listening to ego or are you really listening to your inner being? क्योंकि जो inner critic होता है ना, वो usually are the comments that you're getting from your ego. Your ego is telling you कि you're not good enough. Your ego is telling you तुम्हारे अंदर कोई confidence नहीं। अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? That's just an example. That's your ego telling you that you are not good enough. So yes, listen to your inner critic, but at the same time, be kind to yourself. You're only a human being and you have all plenty of time to work on yourself. हम क्यों भूल जाते हैं कि, you know, no matter what happens, we are where we are. What's wrong with that?
Like I know critic kabhi kabha acha hota hai. Some people who are ambitious, lots of people I meet are very ambitious and they want to achieve a lot of things in their life. लेकिन जल्दी क्या है भाई? So that's where inner critic will come in. Okay, do this, do that. ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो. You're not good enough. You need to do this course to improve your confidence. And like, hang on, you are on your own pace, and eventually you will get there. You came here with a purpose. You're not going anywhere without doing your purpose. So there is no need for the inner critic, and be kind to yourself. Inner critic की सुने. मैं नहीं कह रही कि आप नहीं सुने, उसकी सुने. Tell them thank you. I really appreciate that. Think of it as someone external to you. ठीक है ना? Someone external to you rather than someone your own self telling it to your own self. Someone external. कोई आपको अगर criticize करेगा आपके मुंह पे, what is it that you do? Do you take it personally and जाके आप depressed हो जाते हैं? No. You go like, okay, I respect your opinion, right? And thank you very much for that. But this is my opinion and I'll go away with it. That's exactly what you got to do with your inner critic. आपके inner critic वो रिश्तेदार है जो आपको पसंद नहीं करता कि कुछ कहना चाहता है. So what do you do then? I appreciate your opinion. Thank you so much. But I am where I am and where I am is enough. I'll get there. Awesome. So ये आपने रिश्तेदार वाली बात बड़ी जबरदस्त कही है. We all have that one, isn't it? Exactly. I totally agree with you. तो अभी जैसे कि COVID की situation is continuous and it's not going away any moment soon. We are seeing reports and continuous documentary on this. How do you see that nowadays your work are dealing with your clients who are looking for someone to help them out, come out from this situation? What do you advise to people when there is some uncertain situation comes up? Now, in uncertain situation, COVID-19 is one of the example. Along with that, someone, as Dr. Amjad before said, that if one of the loved one just left you or died or is no more, students, जब वो fail हो जाते हैं exams के अंदर, or the score which they wanted to achieve, they are unable to achieve that score. You wanted to get a job, you done your best efforts, and you are very much hopeful कि वो आपको मिलेगी, but it didn't happen. So how to manage वो जो एक immediate attack होता है stress का, panic का, how to handle that one during uncertain times? So Adnan, I want to start with this COVID-19 situation first, right? जो आपने mention कि first thing first, मैं advice करती हूँ, stop watching the news so much, stop watching the documentary so much. आपके documentary देख लेने से होगा क्या? मुझे आप ये बताइए. Like, okay, you have the basic knowledge, flu है, आपने careful रहना है, cleanliness करना है, अपना ख्याल रखना है, and that's about it, right? Mask पहनना है, gloves पहनना है, whatever the regulation in whatever country it is, and that's enough information. I highly recommend stop watching news 24/7. अगर 24/7 आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 टीवी के सामने जमे रहें और टीवी के सामने बैठ के आप वो देखते रहें. And the other important thing जो आपने रेस की ना कि एक आपने बीमारी की रेस की और एक आपने डेथ की रेस की. With the बीमारी aspect, all I want to say is, and this is not a very well-known concept, especially हमारी community में, and I talk about it a lot, all the diseases, they come and attack you only if you are in your lower vibrations. If you are in the vibrations, मेरे पास I've got a emotional scale. Usually I have them here, but I don't have it right now. But आपके जो emotional scale होता है of fear, of hopelessness, of jealousy, of hatred, when you are in these vibrations or these emotions, तभी आपके पर बीमारियां आती हैं. Otherwise नहीं आती. When you practice higher vibrations of gratitude, of joy, of expecting, of hopefulness, क्यों कहा जाता है हमारे मजहब में कि नाउमीदी कुफर है, something like that? That's exactly the reason. Because when you are hopeless, you are in that lower vibration, और उस lower vibration में सब कुछ आता है. बीमारियां आती हैं आपके पास, और bad situations happen. You don't find that job, you don't pass your exam or whatever जो आपने situation mention की. ठीक है? The other aspect जो आपने mention किया कि फला job नहीं मिली या फला exam नहीं pass किया, this is what I can't get enough tired of telling people कि please ask and it's given. आप जब कुछ मांगते हैं, आपके दिल में जब कोई ख्वाहिश पैदा होती है ना, you gotta have faith
कि वो चीज आपको मिल जाएगी, एंड ट्रस्ट मी, आपको वो चीज मिल जाएगी. I have countless examples of own. Are you still there? Sorry, I got a phone call, so I had to. I got disconnected. Are you still there? Yeah, Uroos, we can hear you. Yes, you can continue. Okay, great. तो मैं कह रही थी कि हाँ, whenever you, जब आपके दिल में, when you have a desire in your heart, from contrast, जब कोई negative emotion आप feel करते हैं, आप realize करें कि what is it that you want in that moment. एंड जब आप वो डिजायर करते हैं ना, वो आपको उसी वक्त मिल जाती है. ऐसा नहीं होता कि आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, एंड देन यू गोना गेट इट. नो, द मिनट यू आस्क इट्स गिवन. ऑल यू हैव टू डू इज टू बी ग्रेटफुल एंड स्टे इन द हायर वाइब्रेशंस. मैं लड़कों को एक बहुत फेमस एग्जांपल देती हूँ, विच दे लाफ ओवर इट, कि लड़के जो कुछ एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बात करते हैं, एंड देन वो गाड़ी उन्हें जगह जगह नजर आना शुरू हो जाती है. व्हाई डज दैट हैपन? Because that's your law of attraction. जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है. तो yeah, there is nothing as failure. Whatever you ask, you can get it if you just have faith and practice gratitude. The last thing that you mentioned about death, Adnan. Death is one thing जो हमने ऐसे separation जो है ना समझ रखा है कि कोई मर जाता है तो चला जाता है. ऐसा नहीं होता, Adnan. I don't want to scare your audience, but the reality is कि बेशक आपका physical body चला जाता है, but the people are still around. They become vibrations, they become energies, and आप अगर उनसे बात करना चाहें, you can, and that's where you have all these mystery performers, you have these tarot cards, and बहुत सारे लोग exist करते हैं. आप Google करें, you'll find lots of them. Dead people still are here. कहीं गए नहीं. हाँ, वो फिजिकल फॉर्म से चले गए बिकॉज उनका जिस्म थक गया था, उन्होंने उसको थका दिया था, मरा दिया था. द बॉडी सेड थैंक यू सो मच, आई गॉट टू गो. बट दे आर स्टिल देयर, सो देयर इज नो नीड to feel that kind of grief as if you have lost something, because we don't lose anything. वो सब यही होता है. You just gotta connect, that's all. Right. Good. जो एग्जाम्पल आपने अभी गाड़ी वाली दी है ना, I can totally relate it with myself. When I got my Ford car, initially I never seen on the roads of Dubai कि वो वाला मॉडल जो है वो, but the moment I got it because I had an interest in that, मुझे लगेगा कि दुनिया ने ले लिया होगा. दूसरी गाड़ी जो है वो Ford Edge ही चल रही है. That's your law of attraction, Adnan. I mean, you will feel like क्या है भाई, मैंने खरीदी तो सबने खरीद ली, ऐसा नहीं है. It's just that because you focused in loving your car so much, all you see is Ford everywhere. Exactly. डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, वैसे हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं. I'm not sure that what's the reason. आपको अगर आवाज आ रही है तो थोड़ा आप भी हमें बताइए. यही जो क्वेश्चन है, and that's the topic of our today. Managing stress in uncertain time, difficult time के अंदर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी आपकी टेक क्या है वो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. अभी अरूसा ही है ना इनका नाम, अगर इफ आई एम नॉट मिस उरूस स्पेलिंग. अरूस ने बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में बताया है कि when in a difficult time we have 4 psychological strength in our brain. First of all is resilience, कि जैसे पहले भी मैंने बात की, इसे ability to bounce back to normal, that's a very important part. कि और we Pakistani people have a great resilience. हम लोग बड़ी जल्दी चीज़ों को से निकल के वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं. दूसरी चीज़, जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं या जो लोग टफ टाइम से निकल आते हैं, और ये कोविड में भी ये चीज़ प्रूव हो गई है, जो लोग इससे निकले हैं उनके अंदर ऑप्टिमिज्म होता है. ऑप्टिमिज्म ये कहता है कि यू ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर. जैसे एक बंदा कहता है कि आधा गिलास पानी में होता है, एक बंदा कहता है आधा गिलास भरा हुआ, एक बंदा कहता है आधा गिलास खाली. बोथ आर राइट. लेकिन वो एक पेसिमिस्टिक लुक देख रहा है. Dr. Saab, we lost you once again. मोबाइल पे टच हो, बीच में कॉल आ जाती तो वो फिर ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाता. अच्छा, तो मैं बता रहा I see. Okay. तो होप
कि होल्ड ऑन पेन एंड्स। जैसे कोविड के अंदर भी जो लोग ऑप्टिमिस्टिक थे उनका तो ये हमेशा नहीं रहेगा, ये आखिर चले जाएगा, इट वोंट रियल, तो वो उसका वेट करते हैं और इस दौरान वो अपनी एनर्जी अपना, वैसे इसमें लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ली, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको इंप्रूव कर लिया, रिलेशनशिप अपने इंप्रूव कर लिए, तो इस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इंप्रूव कर लिया। चौथी चीज इसमें सेल्फ एफिकेसी है, कि सेल्फ एफिकेसी ये होती है कि आप जो काम करना चाहते हैं वो उस काम करने में कामयाब होते हैं, आपके अंदर एबिलिटीज होती हैं और प्रॉपर प्लान करते हो। ये चार चीजें, ये चार मामला जिन लोगों के अंदर पाई जाती हैं वो हर किस्म के टफ टाइम से निकल आते हैं। क्योंकि अगर एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, महमूद गजनवी के दौर में उसका एक शागिर्द था याद, तो वो सब लोग कहते हैं कि आप इसको इतनी वेटेज क्यों देते हैं, क्यों इस तरह करते हैं। तो उसने उससे एक दफा पूछा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि मैं जब परेशान हूँ तो खुश हो जाऊं, खुश हूँ तो परेशान हो जाऊं। वो बड़ा परेशान हुआ, फिर उसने कहा कि दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर हम खुश होंगे तो वो भी गुजर जाएगा, और जब परेशान होंगे तो वो भी गुजर जाएगा। सो दुनिया में कोई चीज स्टैटिक नहीं है, एवरीबॉडी इज गोइंग। तो वो चीजें इस तरह निकल जाती हैं और हम उसमें से निकल जाते हैं। और जैसे इन्होंने रूस ने पहले भी कहा कि बी काइंड टू योर सेल्फ, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी आर बीइंग क्रूअल टू आवर सेल्फ, हम अपने साथ काइंड नहीं होते। वी डोंट गिव टाइम टू आवर सेल्फ, हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हम बहसीते कौम बहुत जल्दबाज हैं, हम फटाफट चीजें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। अगर हम अपने साथ काइंड हो जाएं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को पैट करें थोड़ा सा, हम 7 डेज वीक काम करने वाले लोग हैं, 365 ईयर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस आउट हो जाते, बर्नआउट हो जाते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते, जिसकी ये बहुत बड़ी वजह है। गोरे ने अपने सिस्टम को इतना जबरदस्त किया है कि वो क्वालिटी काम की लेता है, वो काम के वक्त काम करता है, आराम के वक्त आराम करता है। हम लोग काम में भी आराम कर रहे होते हैं और आराम में भी काम कर रहे होते हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो अगर हम अपने साथ काइंड हो जाएं और अपने प्रायोरिटीज को सेट कर लें, अपने आप को मैनेज करना सीख ले, तो लाइफ बिकम वेरी इजी। तो यही चीज हमें एजुकेशन, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग दुनिया में मूव करते हैं, जैसे अरूज की बात कर रही थी, तो हमें ये चीज ये सीखा जाता है, हम सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, दिस इज द वे द लाइफ वर्क। अगर हमने सेहतमंद और लंबी जिंदगी गुजारनी है, बगैर बीमारियों के गुजारनी है, तो हमें इन एबिलिटीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने साथ काइंड रहना पड़ेगा, और अपनी लाइफ के जो एरियाज है उनको प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, तो फिर कोविड क्या, जो मर्जी स्ट्रेस आ जाए, मेरे से निकल जाएंगे। यस, जबरदस्त। आपकी बात से मैं टोटल एड करता हूँ। आई वाज रीडिंग वो रिसर्च फ्रॉम अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल कि पूरी दुनिया के अंदर ओवर 110 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस रिलेटेड जो भी आगे डिजीज होती हैं उसकी वजह से। So I totally see that it's a huge number, and a lot of people even don't understand that when they have to seriously think about it और इसमें से कैसे निकलना है। एक important चीज उरूस, पहले मैं आपसे पूछूंगा फिर डॉक्टर के पास, साहब के पास जाऊंगा, वो है टीनेजर्स, वो है स्टूडेंट्स के अंदर। Again, one research of Harvard Medical School which I was studying is 1 in 5 college students has thought about suicide. वो अपने उस जर्नी के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें सुसाइड का भी सोचते हैं। Around 33% of students consider getting good grades their primary source of stress. This is another from Stanford. थोड़ा सा स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के अंदर ये जो स्ट्रेस का लेवल है, इसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। Adnan, that is such a beautiful question, and I'm really grateful कि आपने ये सवाल पूछा, because to all the teenagers listening here and thinking about if suicide is an option, Adnan, I don't shy away from the fact that I was one of them. For me, it was very important to get really good grades. For me, it was extremely important to outperform everyone. And there have been a couple of times where I did not achieve the way I wanted to achieve. And and once I did commit suicide. So from a person who's done this, I'm telling you, suicide does not resolve anything. Secondly, Adnan, बेशक number अच्छे आ जाते हैं, right? Number अच्छे आ जाते हैं, but is that going to make you happy? Okay, it's going to make you happy, right?
then why can't you just be happy now? I mean, what is that stopping you? I know अच्छे grades important होते हैं, लेकिन क्या अच्छे grades guarantee है कि आपको job मिल जाएगी? I mean, for God's sake, Bill Gates को आप देखें, he didn't even graduate. Mark Zuckerberg को आप देखें. Like all these famous people, Steve Jobs was another example. If you look at all these people, are you top performers थे? I was a topper in my high school. That was a very long time ago. लेकिन क्या हुआ? Nothing. I did not find my purpose until I was at the age of 35. The problem is, Adnan, कि हमारे कल्चर में बहुत सारे पेरेंट्स अपने अधूरे ख्वाब और अपने अधूरे करियर अपने बच्चों को सौंप देते हैं, और वो बच्चे बेचारे, उन्हें पता भी नहीं होता, स्पेशली टीनेजर्स, इतनी हार्मोनल चेंजेस आपके बॉडी में हो रहे होते हैं, एंड यू आर सो कंफ्यूज्ड कि या तो उससे मैनेज करें या माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें. लाइक यू नो, मैं आज तक एक टीनेजर को ऐसे मिली, उसको सामने मैंने बिठाया, मैंने कहा भाई व्हाट डू यू वांट? Half of the time it's been my parents wants to see this will make them proud. What do you want? Is this even making you happy? Achhe number milna, is this what you want? You will never get an answer, yes, this is what I want. Because you know what, Adnan, you've been there, I've been there. At teenage life, all you want to do is just enjoy our life, right? Nobody wants to suffer 10 to 12 hours of, you know, college, uni mein spend kare, ghar ki padhaiyon mein lag jaye. Nobody wants to do that. लेकिन ये जो बुरे ख्वाब वगैरह जो पेरेंट्स जो टीनेजर्स पे थोप देते हैं, to the parents of those teenagers, don't do that to your kids, let them live their life, और eventually हम सब कामयाब हो जाएंगे अगर हमारे अंदर. और फिर वो एक अलग बात है, अगर आपके अंदर डिजायर पैदा होगी ना, then स्ट्रेस नहीं होगा अदनान. लेकिन अगर किसी और ने आपके साथ धोखा होगा ना कि अदनान आपने ये करना है, then you will feel it as stress कि या क्या मुसीबत है, मुझसे ये हो नहीं रहा, and then you will look for a reason to get out of it. And guess what, suicide is pretty easy and it's free. And you don't want to go down that path. So for those teenagers who are wanting to get good grades, ask yourself, is this what I want? Is this what I want to be doing for the rest of my life? Good grades हासिल करना बहुत अच्छी बात है, but it's no guarantee even for the fact that कि जो इस चीज में आप good grades हासिल करना चाह रहे हैं, is this what it says you want to do for the rest of your life? I was a topper. I studied IT. I came to Australia to do my master's in IT. I am working in IT, but what is my passion? My passion is something else altogether. तो जो आपके पास अभी young age है, जो enthusiasm है, जो energy है, put it in finding who you are and what is it that you want to do for the rest of your life, rather than just getting good grades, which may or may not help you get a good life. Good. Dr. Saab, मैं आपसे same question पूछूंगा. How teenagers and young students, they can cope up with stress. लेकिन उससे पहले हमारे पास एक audience का question आ रहा है कि please talk about anxiety and stress relationship. इसके ऊपर पहले आप comment कर दीजिए, then we will go back to our question. Okay. Stress के बारे में जैसे anxiety की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एंजाइटी का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है. वेस्ट के अंदर डिप्रेशन का इशू ज़्यादा है, पाकिस्तान में एंजाइटी का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही जो अनप्रेसिडेंट सी कंडीशंस हैं, आपको पता नहीं चल रहा होना है क्या होगा क्या नहीं होगा. आप बहुत ज़्यादा हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं और रिलीजन से बहुत दूर हो गए हैं. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल आ रहे हैं और जिसकी वजह से मुसलमान बहुत पीछे भी चले गए हैं. और हमारा जो बिलीव है वो बहुत ज़्यादा शेक हो चुका हुआ है, और हम बहुत ज्यादा हर चीज करके फटाफट हो जाए, ये होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं क्या होगा. व्हेन वी आर ट्राई टू लिव इन द फ्यूचर, तो हमें जो फीलिंग्स आएंगी वो एंजाइटी है. हम डिस्टर्ब होंगे, हमारा हार्ट रेट ज्यादा होगा, हम अपसेट होंगे और हम परेशान हो गए, हमारा मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, हमारे हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से हमें लगेगा कि जैसे कुछ समथिंग इज गोइंग टू बी बैड गोइंग टू बी हैपन. तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये एंजाइटी के हैं. अगर हम रिलीजन के करीब रहें, स्पिरिचुअलिटी के करीब रहें और फोकस करें माइंडफुलनेस के ऊपर जैसे अभी बात हुई, और हम रोज के रोज जीने की प्रैक्टिस करें, तो फिर ये एंजाइटी जो है कम से कम होनी शुरू हो जाएगी. और जैसे ही ये प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है, इट्स जस्ट ओके टू फील एंजाइटी, नॉर्मल है. जैसे ही वो एंजाइटी आए तो एक तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, इसकी भी हम डिटेल में बात करते हैं. एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, प्लस आप फोकस करें द वर्क इन हैंड.
मसला ये होता है कि हमारे पास जो काम इस वक्त है, वो कहते हैं वन इज बेटर देन टू इन द बुश। हमारे पास जो काम है उसको हम छोड़ के अगले की फिक्र कर रहे होते हैं। एक गाड़ी मैकेनिक के पास एक गाड़ी ठीक होने के लिए आई है, वो सिर्फ उसकी फिक्र नहीं कि मैं इसको ठीक कर, वो आगे सोच रहे पता नहीं और गाड़ी आएगी नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, उसको अगले की फिक्र पड़े। दिस इज एंजाइटी। अगर हम वर्क इन हैंड उसके ऊपर फोकस करें तो हम एंजाइटी से बच सकते हैं, और हम एंजाइटी को अच्छे तरीके से डील करना भी सीख सकते हैं, और हम बहुत सी आगे चल के बहुत सी बीमारियां जो है उससे बच सकते हैं। और बेशुमार लोग जो एंजाइटी में फंस जाते हैं वो आगे चल के पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट सारे टेस्ट करवाते हैं, बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं, टाइम, एनर्जी। और बाहर लोगों को तो मैंने देखा उन्होंने स्टेंटिंग भी करवा ली, उन्हें और भी, लेकिन एंजाइटी फिर नहीं ठीक। कोई एंजाइटी का ट्रीटमेंट एंजाइटी के डॉक्टर से ही करने से है। तो एंजाइटी को हम हैंडल करना सीख सकते हैं अगर हम फोकस शुरू कर दें इन के ऊपर। अगर फिर भी ना हो तो तमाम चीज़ कैन गेट हेल्प। दिस इज व्हाट अबाउट एंजाइटी। राइट, तो सो मच, आई होप अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें जी। होगा। Secondly, I want to ask the question which before Uroos responded for teenagers और स्पेशली स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ कि वो कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर एक सोसाइटी का, पेरेंट्स का, पेयर्स का एक प्रेशर होता है, वो एक दौड़ लगी होती है, अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर, टॉप के ऊपर हर एक की चॉइस होती है वो 100/100 ही स्कोर ले। और उसके अंदर जैसे मैंने कुछ स्टैट्स भी शेयर किए हैं कि कितने % लोग जो है वो सुसाइड का सोचते हैं और कंटिन्यूस प्रेशर, तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए व्हाट टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स शुड डू। अच्छा, ये बहुत अच्छा अपना सवाल है। जैसे एडोलेसेंस, इसमें पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसमें एडोलेसेंस ज्यादा है, मोर देन 60% है। यूके के बाद परसेंटेज के लिहाज से पाकिस्तान में ज्यादा है। और इसमें प्रॉब्लम्स लेवल क्यों ज्यादा आ रहा है, क्या वजूहात उसमें है? इसमें एक बहुत बड़ी रीजन जो है, आप सुसाइड के बारे में बात कर रही है कि ये वो टाइम है 12-13 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक, ये 10 ईयर्स का जो टाइम है, ये हमारा ब्रेन जो है इसमें डेवलप कर रहा होता है। ब्रेन का हमारा एक पार्ट है जिसे कहते हैं PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हम दिमाग का वो हिस्सा है जिसका हम कॉन्शियसली सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब होते हैं। ब्रेन के इसका जो फंक्शन है वो है असेसमेंट, कि रोजमर्रा के असेस करना है, क्या कौन सा काम करना चाहिए, किधर जाना है, किस तरफ जाना है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कि आपने किस रास्ते से जाना है, कहाँ पे रुकना, क्या करना है, ये सारी असेसमेंट है हमारी अपनी लाइफ के बारे में, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी। उसके बाद है एंगर कंट्रोल, ये एंगर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, छोटे छोटे बड़े बड़े फैसले करने में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट है। इसके अलावा हमारे इंपल्स कंट्रोल, कि अपनी इंपल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। अब अगर इस टाइम पे हमारे वालिदैन वेस्ट के पीछे लग के बच्चों को तनहा छोड़ देते हैं और बच्चों को पीयर ग्रुप के साथ छोड़ देते हैं जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई होता है। अब हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को अपने से ऊपर लेवल में के स्कूलों में डालते हैं जहाँ हमें मुश्किल से फी पे करनी पड़ती है, और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो उनका सोशो इकोनॉमिक जो क्लास है वो अपर होती है, हाई होती है। बच्चे उनको देख के उनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जब चलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं चल सकते क्योंकि उनकी ब्रॉटअप वैसे नहीं हुई, उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो गैजेट्स नहीं है, वो फोन, वो बाकी चीजें नहीं है, उनके पास वो ब्रांड के उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते, तो वो उससे बहुत डिप्रेस और अपसेट होते हैं। उसके लिए पेरेंट्स को मजबूर करते हैं, पेरेंट्स कर नहीं सकते थे, दे गॉट डिप्रेस, दे गॉट अपसेट, और उनका ब्रेन इतना ग्रो नहीं हुआ होता कि वो उनके साथ कर सकें। और पेरेंट्स ने बच्चों की ब्रॉटअप ऐसी की होती है कि वो पेरेंट्स बच्चों के साथ शेयरिंग नहीं करते, बच्चों को सुप्रेस किया जाता कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करनी, जिसकी वजह से बच्चे जो है जब उनको सुप्रेस किया जाता है तो वो उसके लिए जब बाहर एनवायरनमेंट में फिर रहे होते हैं तो वहां पे ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से ड्रग्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है, और ड्रग्स यूज करने के बाद वो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, दे फील लाइट। वो जो अंदर उनका वेट है, जो अंदर उनका स्ट्रेस का वजन है जो कि वो एक्सप्रेस ना करने की वजह, वो उसकी वजह से उनका वेट है वो लाइट हो जाता है। जैसे ड्रग्स कहते हैं दिस इज द थिंग आई रियली वांट इन द माय लाइफ, ये चीज तो जबरदस्त है, वो ड्रग्स की वजह से। और ड्रग्स क्या करती हैं, ड्रग्स का फंक्शन है कि वो डिसइनहिबिशन काज करती हैं। अगर आपके अंदर एंगर आ रहा है, अगर आपके अंदर एग्रेशन आ रही है, अगर आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन आ रही है, तो आप उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर देंगे, क्योंकि वो आपकी इंटरनल जो इनहिबिशंस है उसको रोक दे, खत्म कर देगा, और डिसइनहिबिटेड हो जाएंगे, जो आप करना चाहेंगे वो कर लेंगे। दैट्स व्हाई सुसाइड इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द एडोलेसेंस, सेकंड लीडिंग कॉज है। और पूरी दुनिया में 8 से 10 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। एवरी 40 मिनट्स के बाद एक बंदा, 40 सेकंड के बाद एक बंदा सुसाइड कर रहा है, एवरी 40 सेकंड के बाद।
और दुनिया में सुसाइड रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये इस जो मेंटल हेल्थ डे का ये मोटो भी है, इसका स्लोगन भी है कि हमने सुसाइड के ऊपर काम करना है और उसको रोकना है और कंट्रीब्यूट करना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन चीज़ों में, इन मामला में। और पाकिस्तान में बहुत बड़ा पिल के साथ प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, वाईसी मैप। इसमें 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं जिनके अंदर सेल्फ हार्म की टेंडेंसीज हैं, वो जो कर रहे हैं, हम उनकी फैमिलीज को और उनको मैनुअली असिस्टेड साइकोथेरेपी दे रहे हैं ताकि उनको फैमिलीज को उनको ताकि उनको बचा सके और एक एक नस्ल एक कौम को हम बचा के तो एक 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 हेल्थ प्रमोशन की तरफ ले जा सके, जिंदगी में एक तब्दीली ला सके। और सुइसाइड रेट इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों में बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं वहां पे सुइसाइड रेट, जैसे लिथुआनिया है, लिथुआनिया में सुइसाइड रेट तकरीबन 32 पीपल इन 1 लाख उसमें सुइसाइड करते हैं। रशिया के अंदर 31 पर 100 मिलियन है, 100,000 है। इसके गयाना में 29 है। और उसके साथ ही स्टेट देखें, गयाना के साथ कैरिबियन की बारबाडोस है और बरबुदा है, उसके अंदर 0.5% है, इतना लो है। और 2 स्टेट्स के साथ साथ रेट का कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा बेलारूस में 20 है और साउथ कोरिया में 27 है अबाउट। तो इतना ज्यादा सुइसाइड जो है लोग कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान दूरी है। और कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम एज ए ह्यूमन बीइंग गुड पेरेंटिंग है। अगर पेरेंट्स को ये चीज समझ आ जाए और अपनी नस्लों को डेवलप करने में ये जो ईयर है 21-22 ईयर्स का जो टाइम है 12 to 12, इसके अंदर अगर सही तरीके से बच्चों के साथ एक हमआहंगी पैदा हो जाए और बच्चे शेयर कर सके पेरेंट्स के साथ, तो वो अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, सरवाइव करवा सकते हैं। और एक बच्चा या एक बंदा जिस फैमिली में सुसाइड करता है, नस्लों तक याद रखा जाता है इसकी चचा ने, इसकी ताई ने, इसकी फुफ्फी ने खुदकुशी की थी, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो वो एक हाउंट कर रहा होता है और ये नस्लें तबाह कर देता है। तो इट्स राइट, वेल अंडरस्टूड। उरूस में आपके पास आऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, दिस व्हाट आई वाज आल्सो सपोज्ड टू आस्क यू। क्वेश्चन आया कि जी इज बिलीविंग फीलिंग्स हेल्पफुल, स्ट्रेस इज अ रियल फेज। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पिछला जो स्टूडेंट्स वाला ये क्वेश्चन था उसके ऊपर या इससे पहले जो मतलब वो डेथ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें एक फीलिंग जो मुझे आई थी, एंड मे बी दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबली समहाउ रिलेटेड टू दैट, कि समटाइम जो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस की वो एक फीलिंग आती है, तो वी शुड जस्ट इग्नोर दैट, शुड वी जस्ट इग्नोर दैट, या हमें उसको वेल अंडरस्टूड करके उसको मैनेज करना चाहिए? एंड प्लस दिस कमेंट, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इट? You can't emotions जो stress हो गया कुछ भी, you can't belittle any of your feelings or emotions, because emotions are emotion, energy in motion, और you cannot stop energy. अब वो एक अलग बात है कि आप उसे पॉजिटिवली निकालें या नेगेटिवली निकालें. I think Dr. Mohammed is trying to say something. Achha. So no, you cannot you cannot belittle, or you cannot ignore your emotions, or you can't just bottle up and say अच्छा नहीं मैं इस बारे में नहीं सोच रहा. It's very important that you understand your emotions, and there is and anyone can Google this, which is what triggered me. So what triggered me is basically I am whatever emotions, वो आपको पूरी list दिखाएगा. For example, I am powerless, I'm excluded, I'm judged, I'm blamed, I'm disrespected, whatever. So try to understand your feeling. Okay, one thing you got to do is जब भी emotions as a stress is pretty real, you got to walk away from that situation. जैसे Dr. Mohammed earlier explained किया, you got to walk away from whatever it is. Don't continue doing whatever it is that you're doing and ignore your emotion altogether, whatever you're feeling. Absolutely not. You have to process it. Any emotion, be it stress, be it grief, be it sadness, it needs to be recognized and it needs to be processed. क्योंकि अगर आप उसे आज नहीं process करेंगे ना, वो कल को वो फिर फट के निकलेगा, which is not gonna be very pretty for anyone. अगर फट के नहीं निकलेगा, else you're gonna be sick. People have a lot of heart issues. People have kidney issues. इतनी बीमारियां आजकल invent हो गई हैं because we don't process our emotions properly. हम bottle up कर देते हैं. Bottle up करते हैं तो yes, the next phase is it starts impacting your body. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आप बीमार हैं, and the doctor goes like, stress ना लें ज़्यादा.
That's exactly what the doctor is trying to tell you. Understand your stress, understand your emotions, and take proactive steps to manage your stress, not bottle it up. राइट चलिए मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में अगेन ही इज नॉट हियर स्टूडेंट्स के साथ अब लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर किड्स जिसके ऊपर काफी हद तक तो डॉक्टर साहब ने बताया बट इन द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर माउंट करते रहते हैं अपनी टीम के ऊपर अपने एम्प्लॉयज के ऊपर So what could be the best role of a parent towards their kids or a manager or an employer towards their employee to help them out, to come out without stress? Stress से कैसे वो निकल सकते हैं कैसे ये इनको help out कर सकते हैं Adnan, these are two different categories, so easily I will talk them separately, and the techniques and the ways to do it is different as well. क्योंकि एक तो हो गया आपका parent-child relationship, right? Where you are close to the child, you know your child, you understand your child, and at times बच्चे वही portray करते हैं जो आप portray कर रहे होते हैं as a parent. बच्चे अपने इमोशंस या अपने बिहेवियर्स इन्वेंट नहीं करते बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम दे कॉपी यू एंड बीइंग अ पेरेंट माय सेल्फ आई नो दैट बच्चे the kids mirror you whatever they can they want to be like you which is probably not the right thing but you should try to help them become their own individual lekin ha they are responding to you they are responding to your emotions and they are mirroring your behaviors as well so for parents the best thing they can do for their kids is to be a role model. A role model, how they manage their emotions. A role model, how they look after themselves. And automatically, the kids will, if they're younger kids less than 10, they will start mirroring you. For older kids, बच्चों को आप सिर्फ समझा सकते हैं. You can give them your point of view. You cannot I'm not like at least maybe I've spent too long in Australia इसलिए मुझे पाकिस्तान का ज़्यादा पता नहीं है but you cannot control your kids and it's not right to control your kids आप उन्हें बता सकते हैं कि बेटा I did this and it helped me at least give it a go बाकी बच्चों की अपनी मर्जी होती है what they want to do and if they are in mess the best you can do is Adnan be there don't abandon them क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी I have seen this a lot in the Pakistani families here in Melbourne. They abandon their kids saying, "तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी." Don't do that. You're their parent. You got to be there. कभी कभार, you know, they say it's a listening ear is better than a judging mind. Just be there. Just listen what they have to say without giving them any advice. Parents यही करते हैं most of the time. बैठ जाते हैं नसीहतों के डब्बे लेके ये करो वो करो. But what all the child needs, especially older kids. All they need is someone to just listen to them. That's it. अच्छा अब आप आ जाएं आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप पे यानी कि मैनेजरियल पोजीशन पे अगर आप हैं how you can better manage your employees. Now Adnan, that is a different relationship. You don't know the person who is working for you. हाँ ठीक है आपने 6-8 महीने काम किया होगा आपको पता होगा कि ये कैसा बिहेव करता है या बात करता है या whatever करती है and whatever but you don't know what background they come from. You don't know where they are coming from. You don't know what they're going through. And most of the people don't even share their personal stuff at work. So you just don't know what is going on with them. And especially in the situations like we are at the moment, you just don't know what the other person is going through. So listen with an open mind. I mean, I don't think personally I don't know what's happening in the rest of the world, but I know that in Melbourne, the employers are taking it easy on people because they know that people are going through a lot of change already outside work. So might as well have less stress at work. And if someone is acting out of place, rather than taking it personally, have a one-to-one. Have a one-to-one with the person and ask him that you are not yourself at the moment. And मुझे नहीं पता about the rest of the world again, but in Australia we have something called as Are You Okay Day. There's actually a day, 6th of September, where you go and ask your colleagues or your peers or your employee, are you okay? You don't look okay to me. Are you okay? What is it that I can do?
to make it less stressful for you. Again, I can only talk from where I am, but this has been a very heightened, um, let's say, उसके ऊपर है awareness आजकल कि, ask your employees if they're acting out of place, if they're taking way too many leaves, yeah, if they've said Yeah. something which was inappropriate, ask them, are you okay? Is everything fine? And when they say कि हाँ ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, don't brush it off. Ask. You won't believe this, Adnan, but we actually have a whole day of seminars about this at work, okay, how you can ask your colleagues and your employees. Just be a listening ear and say, look, give them a break. आजकल का दौर वैसा नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि when you bring the work pressure, अच्छा ठीक है, I know तुम्हारे साथ ये हो रहा है personally, but वो deadline थी which you didn't meet. That's not how it works. Not at least in these times. That's not how it works anymore. The best job again अपने employees के लिए कर सकते हैं is to be there and listen to them and maybe tell them to go and speak to Dr. Muhammad. He's got so much information. He can help you out. So, चलें जी डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं फिर। डॉक्टर साहब हमें बताइए, as Uroos was talking about how to manage stress at workplace, क्या कोई ऐसी फिंगर टिप्स के ऊपर 2, 3, 4 चीजें आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि how they can stay focused, what strategies they can practice कि जिससे उनको स्ट्रेस कम से कम हो? Because we have seen at workplace, a lot of people start to first they reach late at workplace, then they try to do a lot of things in the same time. ये भी करना है, वो भी करना है, जिसको multitasking. Personally, I'm not a huge fan of multitasking because a lot of people say कि जी आप इसमें बड़े smart लोग करते हैं, but I believe that what you are doing, do that in a best way first and then move to the second one. वहाँ पे फिर उसकी priorities आ जाती हैं, वो आप कैसे set करते हैं, unnecessary task. तो आप कुछ हमें उनको unnecessary task को कैसे eliminate किया जाए, थोड़ा सा आप हमें 3-4 कोई टिप्स बता दें कि वर्क प्लेस के ऊपर ये जो स्ट्रेस होती है इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये बहुत आला बातचीत अभी उरूस ने भी बातचीत की है। मैं इस हवाले से आई एम बीइंग वेरी लकी कि आई एम लिविंग इन इट बोथ रोल्स एज ए एम्प्लॉयर एज वेल एज एन एम्प्लॉई एज वेल। तो मेरे पास ये दोनों इस वक्त रोल्स हैं जिसमें आई कैन वेरी वेल इमेजिन के एज ए एम्प्लॉयर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जब एज ए एम्प्लॉई आप काम कर रहे होते तो उस वक्त आपने क्या करना है। एज ए एम्प्लॉयर सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो कि एम्प्लॉई के लिए तबाहकुन है वो एंगर है, एंगर फ्रॉम एम्प्लॉयर। वो जितना क्विकली चीज़ों को तबाह करता है और परफॉर्मेंस को ख़राब करता है और कोई इमोशन नहीं करता। और वो इमोशन जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर सकता है वो एम्पैथी है कि आप एम्प्लॉय की जगह पे जाके सोचें कि एक बंदा सुबह से आके इतने घंटे काम कर रहा है, आप और हमारे जो एम्प्लॉयर है उनकी कोशिश होती है कि स्ट्रेच किया जाए। अगर हम उनको 8 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, जब वो जाने का टाइम होता है हम 1-2 काम और कह देंगे ताकि जी और काम रुक जाए, घर जाते हुए कुछ और काम कह देंगे। तो वो चीजें जो है उनको और वो बेचारे करते रहते हैं, करते कोई बात नहीं, और उनको बाद में रिवॉर्ड भी नहीं किया जाता है, सिंपली प्रेज भी नहीं करते कि थैंक यू भी नहीं बोलते कि यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब। कोई टफ टाइम में उसको हेल्प भी नहीं की जाती। तो बीइंग ए एम्प्लॉयर नंबर 1 थी कि एम्पैथी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको किसी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है या व्हाटएवर, आप उसकी हेल्प कर दें। चाहे सबको ना बताने की जरूरत नहीं होती है, वो इस तरीके से करें कि आपके पास एक फंड होना चाहिए जिसमें आप उनकी मुश्किल टाइम में हेल्प कर सके। और आपको पता होना चाहिए आपका जो एम्प्लॉई है वो किस फेज में गुजर रहा है। उसके बच्चा बीमार है, उसके पेरेंट्स बीमार है, घर में कोई प्रॉब्लम है, वो छुट्टी चाह रहा है और आपको अपना पड़ा जो मेरा काम होना चाहिए, बाढ़ में जाए तुम्हारे घर वाले ये। तो यू हैव टू एम्पैथाइज कि उसकी वजह से आपका काम चल रहा है, उसकी लाइफ है, उसकी जरूरियात को भी देखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉयर का रोल एज ए पेरेंट भी है। कोई एक पेरेंट बन के भी सोचे और देखे और इदारा वो चला रहा है तो बच्चों वो उसके बच्चे ही हैं तो उनसे आप सारा काम ले रहे हैं, तो उनकी जो नीड्स हैं उनको भी रखना जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एंगर कम से कम किया जाए और एम्पैथी का मुजाहरा ज्यादा से ज्यादा किया जाए और राइट टाइम पे राइट चीज करनी। तीसरी चीज जो है वो प्रेज है। हम डांटने के लिए तो मिनट लगाते हैं, गलती हो गई डांट के हमने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, और हम ये नहीं देखते, हम प्रेज करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो आइडियल तरीका ये है कि 3 प्रेज के बाद आप एक दफा डांट सकते हैं। अगर हम 3 प्रेज नहीं करते तो फिर डांटने का हमें हक नहीं। तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, वी प्रेज मोर, ये करें।
और दूसरा जैसे जो ऑफ डेज हैं, मैं एक जगह पहले काम करता था ना, तो मेरी जब छुट्टी होनी ना, तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहना है, डॉक्टर अमजद आप क्या कर रहे हैं, आज ये मीटिंग, आप इधर आ जाए उधर आ जाए। तो हर वक्त वो छुट्टी वाले दिन भी आपको तंग करने की कोशिश कर रहे होते थे। तो बीइंग एम्प्लॉयर, मैं अब जब किसी की छुट्टी होती है, मैं कतन को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं छुट्टी घर गए, एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय करें। तो ये बहुत है कि उसको करने दें। अब अगर आप एम्प्लॉई की साइड पे आ जाए, तो बीइंग ए एम्प्लॉई जब हम काम के ऊपर आते हैं, तो हमें कंसंट्रेट और फोकस करने की जरूरत है कि ये 8 आवर जो है ये मेरे एम्प्लॉयर के हैं, ये मेरे वर्क के हैं। उसमें कोशिश ये की जाए कि अब टोटल फोकस काम के ऊपर किया जाए, काम में करते हुए काम किया जाए। उसमें घर से कांटेक्ट, कोई इमरजेंसी हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मोबाइल का यूज करना, बेतहाशा मोबाइल, सोशल मीडिया और बाकी चीजें और गपशप, इन चीजों को कम से कम किया जाए, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर सकते हैं। और मामला हमारे, और जब घर चले जाए तो फिर अपने आप को डिटैच करो घर में, लिव इन नाउ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम घर में जाके काम के बारे में फिक्र रहते हैं, काम पे घर के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जैसे अब शुरू से बात शुरू यहाँ से होती है कि माइंडफुलनेस यही सिखाती है कि लिव इन नाउ, जहां पे है आप वहां पे काम करें। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बैलेंस रखते हुए अपने अपने लेवल के ऊपर काम करके पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्ट्रेच कर रहा है और आपसे ज्यादा काम ले रहा है और डिमांड ज्यादा कर रहा है, तो आप असर्टिवनेस का मुजाहरा करें। आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं, जी मैं ये कुछ कर रहा हूँ और मेरे काम से आप उम्मीद है सेटिस्फाइड होंगे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पे किया जाए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आवर्स दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अपना मुद्दा भी बयान किया जाए अपने जो, ताकि एम्प्लॉयर को पता हो कि हम उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर हम काम ले रहे हैं तो हमें वी हैव टू पे हिम एज वेल, या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दें, या कोई एक्स्ट्रा कुछ दे दें। अगर आप पे नहीं भी करना चाहते तो उसको कुछ छुट्टी एक्स्ट्रा दे दें, या कोई एक्स्ट्रा कोई उसको कोई कन्वेंस की फैसिलिटी दे दें, या कुछ और किसी ना किसी तरीके से उसको ब्राइब करना जरूरी है। तो दिस इज द वे द बैलेंस कैन बी मेड। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक डॉक्टर साहब मोहम्मद आकिफ का भी क्वेश्चन है, हाउ टू बैलेंस एंड इंक्रीज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जरा इसको आप जल्दी से एड्रेस कर दें, फिर मुझे एक चीज उरूस से भी पूछनी है। जी देखिए, नॉर्मन विंसेंट पील एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसने बहुत काम किया है पीएमए के ऊपर। ऑलवेज है पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि आप जैसे मैंने पहले 4 चीजें बताई थी, रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म, होप और सेल्फ एफिकेसी। तो हम ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हम पॉजिटिव तरफ सोचें। देख, मर्फीज लॉ कहता है, इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इट विल, आप उसको रोक नहीं सकते। तो वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, और ऑप्टिमिज्म देखे, हर चीज का पॉजिटिव साइड देखे कि इसका पॉजिटिव होगा, जो होना है वो होगा। और अपनी होप को कभी लेट ना करने दें, अपनी होप को हमेशा टॉप के ऊपर रखें, पीक पे रखें कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, और ऑप्टिमिज्म रखें। तो ये दिस इज द वे हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को रख सकते हैं। राइट, एक्सीलेंट। उरूस, अब मैं जो आपसे पूछने लगा वो है कि अक्सर हमने सुना है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस माइंडफुलनेस, योगा और कुछ दूसरी एक्सरसाइजेस, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक जो है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मेरी वॉच है, ये भी मुझे हर कोई घंटे के बाद बताती है कि अब आपकी सांस लेने का टाइम हो गया है। तो वैसे इसको पता होना चाहिए कि मैं कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहा हूँ, लेकिन वो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज वो कहती है कि नाउ इनहेल एक्सेल। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, how we can recharge our brain with this. That is a very good one, Adnan. Especially मैं भी वॉच पहनती हूँ, मेरी वॉच आप अभी नोट कीजिएगा कि आपकी वॉच आपको उस वक्त प्रॉम्प्ट करती है ब्रीथ करने के लिए, या तो आप एकदम से स्ट्रेस में आ गए हैं, या एकदम से गुस्से में आ रहे हैं, या एकदम से बहुत आपकी एनर्जी डाउन हो गई। आप नोट कीजिएगा, that's when your watch tells you that you need to take or you need to do the deep breathing exercise. मैं सिर्फ फ्रॉम अ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ what it is. So what happens with breathing is when you breathe in and you hold and you let go, breathing helps you release the energy that is trapped in your body. So as I just said earlier, your watch, if you are a little bit stressed, your watch will prompt you, oh, you need to start deep breathing. That is, you need to let that energy out of your body. You have to take in the energy that is outside. Hopefully, it's fresh air, and breathe out the energy that is trapped in your body. The other aspect is
When we are stressed and when we are anxious, we do not take the air fully inside. हम यहाँ से breathe कर रहे होते हैं. I met a very good psychologist as a friend. उसने कहा था हम जब सांस ले रहे होते हैं ना तो हम यहाँ से ले रहे होते हैं. We don't do deep breathing जैसे डॉक्टर मोहम्मद ने कहा. We don't do that. आप देखिए जब आप गुस्से में होते हैं, how are you huffing and puffing जब आप गुस्से में होते हैं, because आप बस ऊपर से आप सांस ले रहे होते हैं. You're not breathing it in and breathing out. Or the best practice is to count till 3. 1, 2, 3, breathe in, hold it for a couple of minutes and breathe out. 1, 2, 3. तो उससे क्या होता है कि जो भी energy trap, as I said, emotions are your energy in motion. Deep breathing say that energy moves along. Right. Great. आपने से ट्रैप नहीं करना, आपको घर नहीं है जो हर एनर्जी हर इमोशन को आप ट्रैप करते हैं, you have to let it go. That's great. डॉक्टर साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं कि please do share some guidelines how to improve decision making ability. And I believe that person is asking when you are under stress और या कोई ऐसी uncertain situation आ जाती है और आपको एक decision करना है. So what a person should do? डॉक्टर साहब वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल है. डिसीजन मेकिंग हमारी जिंदगी में कहते कि हम जिंदगी में वही हाँ जी, कैन यू लिसन टू मी? Yes, please go ahead. Yes. हाँ जी. अच्छा, हम कहते हैं दुनिया में हम वही कुछ है जो हमारे डिसीजंस हैं. हमारी जिंदगी में कामयाबी और नाकामी हमारे डिसीजंस के ऊपर बेस करती है. और माहिरीन कहते हैं जब भी आपने कोई जिंदगी में बड़ा डिसीजन लेना है तो यू मस्ट ब्रूड ऑन योर डिसीजन फॉर 1 नाइट. आप एक रात उस, चाहे आपने फैसला कर लिया है, आपने कल एक काम करना फैसला कर लिया, आप इन्फॉर्म ना करें, वेट करें 1 नाइट आप डिसीजन के ऊपर ब्रूड करें. आपका माइंड उसके ऊपर वर्क करेगा. अगर सुबह भी आपका वही डिसीजन है देन एक्ट अपॉन दैट. नंबर 1. नंबर 2, एक डिसीजन के हवाले से एक तरीकेकार है कि जब भी आप डिसीजन करें 20 आइडिया मेथड है. आप उसकी फेवर में और उसकी अगेंस्ट पॉइंट्स लिखने शुरू कर दें कि अगर मैं ये फैसला करूंगा उसकी फेवर में ये पॉइंट है, उसके अगेंस्ट ये पॉइंट है. वहाँ हम नंबर गेम कर सकते हैं कि मैं उसकी फेवर में कौन कौन से पॉइंट जा रहे हैं. अगर फेवर में ज्यादा पॉइंट्स है फिर वो डिसीजन कर सकते हैं. नंबर 3 चीज जो है, मैं बीइंग ए मुसलमान जो अच्छा जब बड़ा फैसला करना होता है तो कहते किसी से मदद लेनी चाहिए, किसी से डिस्कस कर ले. अगर आप किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते तो फिर अल्लाह ताला से डिस्कस कर लें. तो अल्लाह ताला से डिस्कस करने का तरीका है कि आप इस्तिखारा कर लें. कोई इंपॉर्टेंट बड़ा कोई शादी का डिसीजन है, कोई या आपने कोई बहुत बड़ी जॉब का है, या आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज लाना चाह रहे हैं. छोटे छोटे डिसीजन तो आप करते रहें और छोटे छोटे डिसीजन करके पछताएं ना. डिसीजन करें लेकिन उसके बाद असेसमेंट करें कि ये मैंने डिसीजन किया था तो इसका मुझे क्या फायदा होगा, क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या थी. अपने डिसीजन को जरूर और उसके ऊपर फिर डिस्कस करते रहा करें कि मैं क्या सोच के डिसीजन कर रहा हूँ. और इस्तिखारा की जैसे मैंने बात की कि हम इस्तिखारा करें, अल्लाह की मर्जी अगर उसमें है तो फिर बेखौफ खतर आप कर सकते हैं. और डिसीजन मोरली बार बार डिसीजन चेंज न करें. डिसीजन करें, एक्ट अपॉन करें, डिसीजन करें, एक्ट अपॉन करें. उससे क्या होगा कि आपको डिसीजन करने की आदत पड़ जाएगी. छोटे छोटे डिसीजन करें. आप चाहे कोई छोटी चीज लेने जा रहे हैं वहां कंफ्यूज ना हो कि मैं ये लूं कि वो लूं, ये शर्ट लूं वो शर्ट, जस्ट गो हेड, ये लेने कोई बात नहीं, अगली दफा फिर देख लेंगे. फिर ये होगा जितने ज्यादा डिसीजन करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैं कितने फैसले कौन से ठीक कर रहा हूँ, कौन से गलत कर रहा हूँ. और कंफ्यूजन कम से कम होगी. जितनी कंफ्यूजन कम होगी उतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड ज्यादा होगा और हमारे डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी. 1 मिनट मैनेजमेंट एक सीरीज है कैन ब्लैंचेट की, उसकी एक किताब है गुड डिसीजन बैड डिसीजन, बहुत जबरदस्त किताब है. अगर वो पढ़ना चाहते वो पढ़ सकते हैं. ये कुछ चीजें थी डिसीजन के हवाले से. Thank you so much. I know that it was a promise to have a 60-minute session, but I think so we reached up to 90 minutes almost. Uroos, thank you so much for your time. Dr. Saab, आपका भी शुक्रिया. But before closing, I want any final thoughts from Uroos related to this topic of today. Adnan, all I want to say is to Dr. Muhammad भी बहुत बार mention कर चुके हैं, is to live in the moment. Stress आपको तभी होता है when you are thinking about the future too much, and future बनता है from your present. So if you are enjoying
in the present, then your future will be enjoyable as well. And the second thing which you mentioned was multitasking. Uh, Again, I used to be a big multitasker, but guess what? Multitasking is not the best thing that you can be doing. You're doing for yourself. You need to stop doing that. Or you're mindful. This again ties it back into mindfulness. Multitasking does not let you enjoy either of the tasks that you're trying to do. Amazing. Thank you once again. Dr. Saab, आपकी कोई final thoughts नहीं? Any piece of advice finally you want to give to youngsters, the elder ones, professionals, working, non-working people, moms staying at home, teenagers? कोई एक piece of advice जो आप देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू वेरी मच, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरे नेट का थोड़ा सा इशू रहा, अब इसमें कर नहीं सका, लेकिन अल्टीमेटली ऑल इज गोइंग वेल, दैट एंड्स वेल। तो उसमें फाइनल थॉट मेरी यही है, और मैं हर जगह यही लोगों को भी कहता हूँ कि देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ जिसको हम निगेट कर देते हैं, जिस तरह फोकस नहीं करते, जो हमें नजर नहीं आता, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी है। हमें अपनी फिजिकल नीड्स का, अपनी चीज़ों का बहुत ख्याल होता है, उसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से हम बहुत दूर हैं। तो मेरा लास्ट थॉट यही है, लास्ट मैसेज ये है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करें। जैसे स्पिरिचुअलिटी के एक हम कहते हैं, एक नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी है। उसको मैं कहते हैं नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी 4 चीजों के ऊपर बेस करती है। फियर है, सेल्फ पिटी है, रिजेंटमेंट है और डिसऑनेस्टी है। जो पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी है वो इसके पॉजिटिव अगेंस्ट 4 चीजें। फियर के अगेंस्ट ट्रस्ट है, लर्न टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स एंड ऑलमाइटी अल्लाह। दूसरी सेल्फ पिटी है, सेल्फ पिटी का जो उल्टा है वो ग्रेटिट्यूड है। ऑलवेज बी थैंकफुल, थैंकफुल होना सीखें, अपने घर वालों, अपनी फैमिली, जहां भी हो, बी थैंकफुल। और तीसरी चीज रिजेंटमेंट के अगेंस्ट है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर सेल्फ, जहां है, जैसे है, जो कुछ है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। और चौथी चीज है ऑनेस्टी, कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट एट एनी कॉस्ट, और ट्राई टू बी क्लोज टू योर रिलीजन एंड ऑलमाइटी अल्लाह। जितने हम अल्लाह ताला के करीब रहेंगे, अपने रिलीजन के करीब रहेंगे, उतनी हमारी स्पिरिचुअलिटी अच्छी होगी, हम अच्छे पेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे एम्प्लॉयर बनेंगे, अच्छे एम्प्लॉई बनेंगे, और हमारी जिंदगी बेहतरीन और खूबसूरत होगी। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much once again, my both respected guests. The video is recorded and it's available on YouTube to watch it later. So anyone who missed any part of this, you may go back on YouTube channel following the same link and you can watch this from beginning till end. We had talked a lot of things about how managing stress in difficult time, in crisis, जब uncertain situations होती है, तो stress is something which immediately हमें हो जाती है, तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है। A lot of things we talked about it. मैं just अगर इसको summarize करना चाहूँगा तो 2 से 3 चीजें, ये 4 चीजें होंगी। First we talked about the focus कि जिस मोमेंट के अंदर आप रह रहे होते हैं, जिस काम को आप कर रहे होते हैं, जिस पर्सन के पास आप बैठे होते हैं, उस पर्सन के ऊपर, उस काम के ऊपर, उस मोमेंट के ऊपर फोकस करें। Do not let the horses of your brain run here and there. वेरी मच इंपॉर्टेंट टिप जो दोनों ने और स्पेशल उरूस ने उसके ऊपर बात की है। सेकंडली डॉक्टर साहब ने जो बताई थी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेक वन चेंज एटलीस्ट आज से। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इन योर पर्सनल हैबिट्स, जैसे कि आपकी कोई डाइट है या एक्सरसाइज है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें, वॉक करने की कोशिश करें, गो इन ओपन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अपने खाना पीना जो है, अपनी जो सोने की आदत है, किसी एक चीज को स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट्स द ग्रेटिट्यूड। पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आए, और जो चीजें आपको अल्लाह ने दी हुई हैं, whether it's your health, you are having full body, you are living under one roof, you have got your parents, you have family, and all these things, most importantly you have your health. तो इन तमाम तीन चीजें मैं तो इसको समराइज करना चाहूंगा। There is no doubt we cannot be stress free, but we can learn, like any other skill, we can learn how to practice and manage stress. Thank you very much once again, everyone, for watching this session. I will see you next week with a new session, with a new topic, with our new guests. Again, मेरे आज के दोनों गेस्ट जो हैं, उनके टाइम का और उनके तमाम जो उन्होंने हमारे साथ इनपुट शेयर है, उसके मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। Thank you very much, Uroos, and thank you very much for Dr. Muhammad Amjad from Pakistan for joining me today. Thank you very much. Thank you. Thank Bye you. bye. Allah Hafiz. Allah bless you all.
Allah Hafiz. Bye.